अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को ग्लूटेन फ्री रोटी बनाने का तरीका बताऊंगा। स्क्रैच के साथ किस तरह ग्लूटेन फ्री रोटी बनती है, किस तरह स्टार्ट होती है, किस तरह फिनिश होती है, सारा अमल बताऊंगा आप लोगों को करके। तो अब मैं इंग्लिश में थोड़ा सा अपने अंग्रेज़ दोस्तों को बता दूँ। Guys, today I'm going to make gluten free chapatis and I'm going to show you from scratch how I'm going to start, what do we need to do. So everything is going to be in this one video. Hopefully you guys are going to like this if you like it, and definitely I hope you're going to subscribe my channel for different gluten free items I'm going to make, and I'm going to show you how to make them in desi style. So stay with me and I'm going to show you in 2 minutes. So friends, here is gluten-free flour. Of course, first of all you need gluten-free flour, and I've got this Juvela fiber mix. Always remember you have to buy Juvela fiber mix. You can buy any other flour you want to, but it has to be fiber mix. Let me and guys, I'm going to explain in the Punjabi as well for my Punjabi friends. So जब भी आपने कभी आटा लेना है, आपने फाइबर मिक्स लेना है। कभी भी फाइबर वाइट नहीं लेना या वाइट मिक्स नहीं लेना, फाइबर मिक्स लेना है। और मेरे पास जुवेला का है। अगर आप लोगों को ये वाला आटा चाहिए आप ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं। 10 पाउंड का एक मेरा ख्याल है बॉक्स आता है ऑनलाइन। अगर आप लोगों को ये चाहिए, मेरे से चाहिए, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं 8 पाउंड में आप लोगों को ये दे सकता हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके, मेरा ईमेल एड्रेस होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप ईमेल कर सकते हैं मुझे जो भी आप लोगों को चाहिए हो, जिस किस्म की भी चीज़ चाहिए, पास्ता ये वो, मैं आप लोगों को वो भी सप्लाई कर सकता हूँ। तो आपको मैं करीब से दिखा देता हूँ। ये है जुवेला फाइबर मैक्स। तो अब मैं इंग्लिश में अपने अंग्रेज़ दोस्तों के लिए, सो गाइस व्हाट वी गोइंग टू डू इज वी हैव टू पुट द केटल ऑन, द वाटर हैज टू बी बॉइलिंग हॉट वाटर. What you got to do is I've got a wee bit of left from the last chapatis I've made. I'm going to use this as well. The quantity, I can't tell you exactly how much quantity I'm using for this flour, but I can show you roughly, and you can see from here how much flour I'm using and how much water I'm using. I will let you know about the water and the flour, how you mix it, how much do you need. So here you can see, so far there is nothing in there. So I'm going to fill this tub about this much. So this comes up to about this size, 8 ounce, say 4 8-ounce you have to put in this wee tub. 4 containers of 8 ounce. So you put them in this, and the water is boiling now anyway in the kettle. So the boiling water you have to add on in this. You don't have to put any cold water. It's supposed to be hot water. That's when you can make a nice dough for the chapati. तो दोस्तों आटा मैंने ले लिया तकरीबन 4 आउंस के 4 कंटेनर मैंने डाले इस डब्बे के अंदर। अब मैंने क्या किया कि मैंने केटल के अंदर पानी बॉईल कर लिया था। बॉइलिंग वाटर इसके अंदर डालना है, कभी भी ठंडा पानी नहीं डालना, ये आटा नहीं बनेगा सही। इसमें गर्म पानी डालना है, और पानी आप खुद से खड़े होके देख सकते हैं कि आपने कितना ऐड करना है। 4 आउंस है इसके अंदर, 4 दफ़ा डाले 4 आउंस की डब्बियाँ, तो ये बन गया तकरीबन 16 आउंस। इसके अंदर आप हल्का हल्का पानी ऐड करेंगे और देखते जाएंगे ऊपर से कि ज़्यादा तो नहीं, आपको खुद से फील होगा अब ये बहुत है पानी मेरे लिए। अगर कम लगे तो बाद में आप ऐड कर सकते हैं। और इसे हमेशा आपने फोर्क के साथ मिक्स करना है, क्योंकि बॉइलिंग वाटर है, इसमें हाथ नहीं डालना, ठीक है। सो गाइस, व्हेनेवर यू हैव टू मिक्स दिस hot water in this flour, you have to use a fork. Don't use your hand at all, because you're going to burn in the end anyway. It's a common sense, you know what I mean. So yeah, and I've explained in Punjabi as well, like how much flour was there, how much water I need to put in. You have seen the water, the quantity going in. You have to put water by your own need, what you think is appropriate for the flour. Not too much, not too less. You have to make the dough really nice and like not fluffy, no solid either. So
If you think the water is less, you can add on water into it as much you want it to make it nice and soft and no fluffy, no hard either. So far when I'm mixing this up, I can see I could add water, but before adding water, I will tell you what to do exactly with this flour after mixing with the fork. Right, so now when you've mixed it enough with the fork, you have to use your hands to make the dough, right? That's when you would understand exactly when you feel on your hands the flour is ready, the dough is ready or not. If you think it's dry, add on water. If you think it's not dry, it's perfect, then that's it. You don't have to do anything else. Just make the dough. So now I'm going to make the dough with my hand. So I can feel it. My dough is absolutely fine. I don't have to add any water. So let me make the dough and let's see it. So that's the way you just mash and mash it in. Keep on mashing with your hands and you can see the texture is coming up. The texture is coming up. So I'm going to explain in Punjabi. दोस्तों, अब आप लोगों ने देखा है मैंने पहले फोर्क के साथ मिक्स किया. फोर्क के साथ मिक्स करने के बाद जब मैंने देखा कि बस फोर्क के साथ बस हो गई है, अब जनाब साहब को अपने हाथ यूज़ करने पड़ेंगे, तो चौधरी साहब ने ज़रा अपने हाथों से अब इसे मिक्स किया. हाथों से मिक्स करने से क्या होता है, आपको फील आ जाती है कि आटा रेडी है कि नहीं. अब आप देख सकते हैं पहले किस तरह का था और अब किस तरह का है. अब डो रेडी है, परफेक्ट है डो. परफेक्ट डो में आप फील करते हैं अपने हाथ के ऊपर, कभी भी आप ऐसे नहीं कर सकते. तो हाथ पे मैंने फील किया, डो मेरी बिल्कुल रेडी है. यू कैन सी द डो इज एब्सोल्युटली रेडी फॉर द chapatis. Here we go. That's us. The texture of it, perfect. The dough is ready. So what am I going to do? I'm going to break into two for 2 chapatis. And always remember, so whenever you make chapatis from gluten-free flour, they are not going to be exactly round. They could be Australian map or a UK map or a Pakistani map. Do you know what I mean? Because there is not enough gluten in it. This is why it's really hard to make round chapatis of it. So this is the one chapati and this is the second. And you know what? The most important thing in gluten-free flour, when you make the dough, remember you only make for 2 or 3 chapatis because this flour gets dry so quickly like that. So you need to make the dough there and then make the chapati there and then and make it. If you leave it for quite a long time, this is going to get dry and the chapatis are going to be harder and you won't be able to roll it. So I'm going to roll it now quickly and I'll hopefully make it round. You don't need any dry flour underneath this dough. तो दोस्तों ये जल्दी से जब आप लोगों ने इसका आटा गूंद लेना है ना, तो आपने इसे वेट नहीं करवाना, ज़्यादा देर के लिए इसे आटे को रखना नहीं है क्योंकि इसके अंदर ग्लूटेन नहीं होता, तो ये ड्राई हो जाता है. ड्राई हो जाएगा आटा, फिर ये चपाती का जो है ना पेड़ा, ये आपका बनेगा नहीं, चपाती सही नहीं बनेगी. और याद रखना ये गोल बनाना बड़ा मुश्किल होता है. अभी आप देख रहे हैं कि मेरे भी अल्लाह के हुक्म से गोल बन रही है माशाल्लाह. बाकी यूजुअली मेरे से इतनी गोल बनती नहीं है, अल्लाह के हुक्म से ये वीडियो के लिए अच्छी बन गई है. वाह या अल्लाह तेरा शुक्र. तो एनीवे घबराना नहीं है, किसी भी शेप की बन जाए, ऑस्ट्रेलियन मैप बन जाए, पाकिस्तानी नक्शा बन जाए, नो प्रॉब्लम, खानी रोटी होती है. लेकिन फिलहाल ये देखें, इसके नीचे खुशका लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आटा आपने परफेक्ट गूंदा हो ना, क्योंकि ये आटा इस तरह का ये जुड़ता नहीं है ज़्यादा. ये देखें, so you can see one chapati ready. So there we go. I'll show you. This is the gluten-free chapati. Absolutely ready. So now what I'm going to do, I'm going to put that on the plate, hot plate, and I'll show you the end of it. Give me 2 ticks. So there we are. The hot plate is on. The tawa is on. You put chapati on top of it. Mashallah, it's so round and nice chapati. I'm very happy to see this. And you can see the other dough was lying in that box is getting dry. I'll show you the texture of it. Look, it's getting dry. This is why I said you need to make this flour quickly and make the chapati quickly
as possible. Otherwise, it'll go dry and the shape wouldn't come up because the flour goes cold and it doesn't get rolled properly. You would see the shape of this chapati and you've seen the shape of the first chapati. दोस्तों देखा आपने कि पेड़ा मैंने अभी दिखाया था, दूसरा पेड़ा वो ठंडा हो गया तो वो किस तरह उसकी शेप बदलती जा रही है। अब देख लेना आप पहली चपाती और दूसरी चपाती में काफ़ी फ़र्क आपको नज़र आएगा। दूसरी चपाती की शेप नहीं सही बनेगी, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह ताला मज़े की बनेगी। गोल गोल ना हुई लेकिन रोटी अच्छी बन जाएगी इंशाल्लाह ताला। अब ये देखें ना, इस पे जोर भी लग रहा है। You need a wee bit of power on it now. You need to use a wee bit of power. I've just done my exercise. I don't want to use any more energy on anything. I still have to eat my chicken and stuff, guys. But I didn't have much time. I thought, you know what, I'll quickly just make the chapatis and show yourself. And on the other side, I'm going to put my boiled chicken on. So what I'll do, I'll make the gluten-free wrap with that chicken. Before I forget, I need to tell you one more thing. You don't have to put a lot of heat underneath it. You have to be on the medium heat. If you put a lot of heat, the chapati will be cooked on the top, but it wouldn't cook in the inside. So you have to keep the medium heat, not too much. And don't worry about it, it's going to cook all the way through nicely. So दोस्तों, इसके नीचे ज़्यादा तेज़ आग नहीं करनी, इसके नीचे थोड़ी मीडियम आग रखनी है ताकि चपाती अंदर से भी बराबर कुक हो और ऊपर से भी। अगर आप तेज करेंगे ये जल्दी से ऊपर से सड़ जाएगी, अंदर से नहीं बनेगी। ठीक है, अब मैं जरा अपना चिकन बॉयल ऊपर रख लूँ साथ, क्योंकि मैंने रैप बनाने हैं। कसम से भूख बड़ी लगी हुई है, मैंने अभी एक्सरसाइज की और मैंने अपनी प्रोटीन्स नहीं लिए, सॉरी। चलें एक चपाती पूरी बना के ना फिर मैं कर लूँगा। अब आप ये दूसरी चपाती की शेप देख रहे हैं, इट्स नॉट कमिंग अप नाइसली एट ऑल बिकॉज द फ्लावर गॉट ड्राई। So if you like the way I've made the gluten-free chapatis, so you have to like, subscribe and share my channel for further videos, but I'm going to upload soon about the gluten-free products. Hopefully you guys are going to like them as well. And if you need to ask me anything about gluten-free stuff, you can actually leave me a comment or you can email myself for any other food recipes you wanted to know. By that time I would be keep on making gluten-free things and I'm going to keep on showing yourselves how I'm doing them and yourselves can do it in the house as well. तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा है कि मैंने ग्लूटेन फ्री चपातियाँ तो आप लोगों को सिखा दी हैं। और कोई चीज़ आप लोगों ने पूछनी हो, करनी हो ग्लूटेन फ्री की, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करके दिखाऊंगा, बना के दिखाऊंगा और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए अच्छा होगा। Because I'm gluten free myself, I know how we struggle to get gluten free chapatis and how to make them. But yeah, with the passage of time, you do get to know these things anyway, eventually, because we are hungry, we are starving, no one else for us. We are hungry, we have to find things, nobody else is going to find things for us. It was really hard for me in the beginning as well to find gluten-free chapatis and stuff, because as a Pakistani origin guy, we live on chapatis and curries, man. And when I got told by the doctors that I'm gluten-free, it was really hard for me in the beginning to find out gluten-free flour. And I remember I was keep on eating rice for 1 year, curries, rice, and that gave me a lot of dryness in my body. The rice are not that great for your body at all, man. First thing, your belly comes up bigger, you start putting on weight, and then the dryness. So yeah, I was struggling for that long, man, for 1 year, and eventually I found a flour, and then it took me good 6 months to understand how to make chapati off that flour. And now, alhamdulillah, I'm absolutely fine at making chapatis. I make pastas, I make curries gluten-free. Trust me, everything is alhamdulillah perfect now. So I'm going to show you guys everything so you guys don't have to struggle the way I have struggled. So guys, you can see the chapati is about to be ready. I'm going to show you till the end and I'm going to finish the video there because I have to get ready, I have to go somewhere, guys. But my main purpose was to show you the chapati, gluten-free chapati, how you make them. So hopefully you like them.
the chapati. You can press a bit on the top and you can feel it if the chapati is ready or not. I can feel the chapati will be ready within next 10 seconds. I'll be ready to eat. So दोस्तों आपने देख लिया चपाती का टेक्सचर. आप लोगों को तो पता ही है कि चपातियाँ कब रेडी होती हैं, पता चल जाता है देखने से. तो and always remember guys, whenever you finish the chapati, you keep it in a cloth and you cover it, because this flour gets dry so quickly. You need to put in a cloth and you need to cover this. So I've put into the cloth and I've covered the chapati, stay moisturized. Okay guys, so that's me. The chapati is finished, ready to eat. And look at the Australian map I've made. I hope you like it. Right guys, look after yourself and keep watching my channel. Like, subscribe and share again. Don't forget. Okay दोस्तों, अपना ख्याल रखो. इंशाल्लाह ताला दुआओं में याद रखो. आप लोगों को अच्छी चीजें और अपलोड करूंगा. Take care. Allah Hafiz.